Hello students, in previous video we have learned how to add the amounts of money, and today we will solve some questions based on it. So we have worksheet number 5 based on it, and the question number 2, that is question number first we have already done in the book only. So the question number 2 is arrange and add the following amounts of money. Now the A part, rupees 47 rupees 00 paise and 78 rupees 00 paise and 35 rupees, right? We have to add these three amounts. So yesterday we have discussed how to add them. First of all, we have to arrange them in column. And how to arrange in column? Write down amounts one by one. Rupees 47.00. Next is rupees 78.00 and last one is 35.00. The thing which we have to keep it in mind that the point will come under point. That means dot will come under dot. जो डॉट है वो डॉट के नीचे ही आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए, और ये हमारा ऐसे ही आंसर में भी सेम उस जगह पर आप हमारा डॉट आना चाहिए. सो स्टार्ट एडिंग, जैसा हम पहले भी ऐड करते थे. 0 + 0 + 0 is 0, 0 again, and then 7 + 8 is 15, 15 + 5 is 20, 2 carry over, 4 + 2 is 6, 6 + 7 13 + 3 is 16. So 160 rupees is the answer, and don't forget to write this rupees sign. Now the next B part, in this we have to add the two given amounts. B part is rupees 93 rupees 25 paise and 64 rupees 65 paise. Now we have to add these two given amounts. So how can we add them? Rupees 93 rupees 25 paise and 64 rupees 65 paise. Now add them. So what we have to keep it in mind, that dot will come under dot and rupees will come under rupees. जो पैसे हैं वो पैसे के नीचे ही आएंगे and rupees के नीचे आएगा. Add them. 5 + 5 is 10, 1 carry over, 6 7 8 9. The point will come under point. 4 + 3 is 7 and 9 + 6 is 15, and rupees will come under rupees. So 157 rupees 90 paise is the answer. Now try to solve the C and D part yourself. I'm doing the E part, that is 97 paise and 9 paise and 1 rupee 9 paise. We have to add these three amount of money. So what we have to do? We have to arrange them in column first and then we will add. So arrange them in column. So I'm doing here rupees 0. Here there is no rupee. 0
only paise is there, 97 paise, and then 9 paise, and last one is 1 rupee and again 9 paise. Now we have to add them, so we have arranged them properly. पैसे के नीचे पैसे आए हैं, पॉइंट डॉट के नीचे डॉट, रुपीज के नीचे रुपीज, एंड साइन ऑफ रुपीज के नीचे साइन ऑफ रुपी. नाउ ऐड देम. 9 plus 9 is 18, 18 plus 7 is 25, 2 carry over, 9 plus 2 is 11, 1 carry over, 1 plus 1 is 2, and dot will come under dot. ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही आने चाहिए जैसे हमारे शर्ट के बटन्स होते हैं, सेम उसी वे में हमारा डॉट जो है वो नीचे नीचे आता है प्रॉपर ऑर्डर में. एंड देन रुपीज साइन. सो आवर आंसर इज 2 rupees and 15 paise. And I will also do F part for you, that is rupees 143 rupees 83 paise, 134 rupees 28 paise, and 348 rupees 23 paise. So first of all we will arrange them in column and then we will add. So first of all arrange them in column. Rupees 143.83, that is 143 rupees 83 paise. Second one is 134 rupees 28 paise, and third one is 348 rupees and 23 paise. The most important thing is कि आप properly amount को column में arrange कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. If you have not arranged them in proper order, then your answer will be wrong. अगर आपने इनको properly arrange कर लिया है, then only you will get the correct answer. And what is the proper way is, जैसे मैंने आपको अभी बताया, पैसे के नीचे आपके पैसे ही आएंगे. प्रॉपर यू हैव टू सी द प्लेसेस कि कौन से प्लेस के नीचे आ रहा है आपका. देन डॉट विल कम अंडर डॉट इवन इन द आंसर. एंड रुपीज में भी आपके जो आपका पर्टिकुलर प्लेस है उसके नीचे ही आपका रुपीज आने चाहिए, एंड देन रुपीज साइन. सो ये सारी चीजें आपने ध्यान से अरेंज करने हैं. Now add them. 8 plus 3 is 11, 11 plus 3 is 14. And secondly, your calculation भी जो है आपकी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. Do practice of addition, subtraction, multiplication and division, because these 4 mathematical operations, जो basic mathematical operations हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग यूज होने हैं. और इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे दैट विल हेल्प यू इन द हायर क्लासेस ऑल्सो. सो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए एंड एक्यूरेट होनी चाहिए. मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए इन 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल्सो लर्न द टेबल्स, जो आपने बार बार करते रहना है ताकि आप उनको भूलें ना. So we are adding. So 8 plus 3, 11 plus 3 is 14. Then 8 plus 2, 10, 11, 12, and 1, 13. Now 1 carry over and dot will come under dot. 8 plus 4 is 12. 12 plus 3, 15, plus 1 is 16. 1 carry over. 4 plus 3, 7. 7 plus 4, 11, plus 1, 12. 1 carry over again. 3 plus 1, 4, plus 1, 5, plus 2, plus 1, 6. And rupees sign will come under rupees sign. So this is the answer, 626 rupees 34 paise. So do the remaining parts, that is C and D part of this question number 2 yourself. And now in next video we will learn that how
we can add the give amounts in cash memo. Cash memo means जो आपके bills आते हैं उनमें हम उनको हम रीड करना सीखेंगे, कैसे कैश मेमो बनता है और कैसे उसमें जो हमने एडिशन किया है अभी अमाउंट्स का वो कैसे उसमें होता है. So that we will learn in our next video. Thank you.